आपने कहा कि हमें बातें करनी नहीं आती, आप ट्रेलर देख लिए, ट्रेलर अच्छा लगा कि नहीं लगा? पहले तो इनसे वो ले लेते हैं, शो ऑफ हैंड्स यार प्लीज। इनफैक्ट लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, पढ़ना भी और सुनाना भी, तो मुझे तो बहुत मज़े आए। यस ऑफ कोर्स कोविड ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं उसके बारे में क्या सोचना। तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस बस यही था कि हर मोमेंट आई स्टे ट्रू टू द स्टोरी। I try to tell an authentic story. I do justice to the faith of so many people. मतलब नेटफ्लिक्स से लेके मेरे प्रोड्यूसर और जो लोग हाँ बोलते हैं पिक्चर को, बाबिल ने अपनी पहली पिक्चर के लिए हाँ बोला है मेरे को, तृप्ति ने हाँ बोला है, अमित सियाल ने हाँ बोला है, स्वास्तिका मुखर्जी ने हाँ बोला है, त्रिवेदी, ऑल द लिरिक्स, माय डीओपी, एवरीबडी, दे से यस टू यू, टू द स्क्रिप्ट। उस फेथ को जस्टिफाई करना हर रोज़, that is the only challenge, because you don't want to let them down, you don't want them to feel कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, बस उतना ही। So that's it. मुझे लगता है जो गट फीलिंग होती है ना, it's a very real thing, and upon reading the script, अगर आपको लगता है कि नहीं, you don't agree to the script or to the character, then you should not get into it, because then it can go wrong for you and for the people who are associated with the project. But luckily for me, that has never ever happened, and it can never happen if Anvita Dutt is involved and Clean Slate Films is involved. So yeah, I would say that I've been lucky. These films have chosen me, I believe. I have not chosen these films. So would you also describe that how different or how similar is Qala to you? She's very, very different. I'm not like her at all, please. But she is a very, very, very special girl. It was a lot of fun for both of us to, you know, build her. She has given birth to Qala, and it was interesting for me to, you know, get into her world, to see the world from her eyes. And yeah, it was a very special journey, something that I will cherish for life. सर मिस्ट्री तो पता नहीं, मुझे वो आंखों में आ गई तो आ गई, बट द वन नोट दैट मैम गेव मी वाज दैट जगन इज गॉड पार्टिकल, एंड आई थिंक दैट कम्स आउट इन हिज इनोसेंस एंड हिज कंप्लीट डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट एंड हिज आर्ट। आई थिंक दैट्स दैट। यार मेरे दोस्त हैं अनमोल, बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी ये, और अन्विता जी ने, बता दूँ क्या स्टोरी, वो काफ़ी फ़नी है ना। तो ये कुछ तो कास्टिंग वास्टिंग चल रही थी, तो आई थिंक अन्विता जी ने अनमोल से बोला कि मुझे ना ऐसा अमित जैसा चाहिए कोई ये रोल करने के लिए। तो फिर अनमोल ने कहा कि अमित से ही बात कर लेते हैं ना। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और इन ऑल सीरियसनेस स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैं स्क्रिप्ट रख नहीं पाया नीचे। और कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको करना ही करना चाहिए काम। तो आई थिंक अन्विता उनमें से एक हैं। मैंने बुलबुल देख रखी थी, और आर्टिस्ट हैं, और अपनी फिल्मों में फिल्म नहीं कह के पोएम्स कहती हैं फिल्म के थ्रू। तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म में लिया। और आई थिंक स्क्रिप्ट वाज द किंग, and then obviously the people that I was going to work with, and yeah, that's it. बुलबुल से भी पहले शायद से लिख चुकी थी अन्विता, तो तब से उनका ये मन था फिल्म बनाने का। और कहानी इतनी स्पेशल थी, इतनी लेयर्ड थी, बहुत साइलेंसेस हैं कहानी में, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है, द वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टिंग। नहीं, ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है ऐसे लिरिक्स राइटर्स की, म्यूज़िक कंपोजर्स की, कि ऐसी फिल्म मिले जिसमें म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ द फिल्म, म्यूज़िक इज़ अ कैरेक्टर इन द फिल्म, द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ अ म्यूजिशियन सिंगर। तो बहुत मज़ेदार चैलेंज था। प्लस अन्विता बीइंग अ लिरिक्स राइटर, डायरेक्टिंग द फिल्म एंड आस्किंग अस अदर फेलो लिरिक्स राइटर्स टू राइट फॉर हर,
It was a privilege, and then दोस्ती भी हमारी इतनी अच्छी है कि हमको बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में. और I think every lyrics writer, all of us, I can say for all of us कि हम सब बहुत privileged थे कि इस फिल्म में काम करने. अपने गाने की सुनाते हैं सर. सबसे पहले मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा आप से कि अमित त्रिवेदी सर हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं और कुछ नया करते हैं मेरी आवाज़ के साथ. और अन्विता जी ने चूज़ किया, अमित सर ने मुझे उस मकाम पे माइक पे खड़ा किया. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक्टर के लिए सारे गाने गाना, उसकी आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज के समय में, जहाँ पे एक गाने में 6 सिंगर होते हैं. तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ. थैंक यू सो मच. कैसे उन्हें ये समझाए सजनिया के मन में अभी इनकार है. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. We are always unsure which one to go for next. So that's the biggest challenge working with Anvita, which one to go next. But I think the desire of her to tell stories shows on screen, and for us it is the same desire. So it's a natural fit for us. प्रेपरेशन की जहाँ तक बात करें, अन्विता एंड मेरा एक अभी हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जहाँ पे वी बिल्ड द कैरेक्टर फ्रॉम द एज ऑफ 5, विच इज़ व्हाट वी डिड फॉर आवर फर्स्ट फिल्म बुलबुल, एंड वी फॉलोड द सेम प्रोसेस हियर. And we build the backstory from the age of 5 up to the age that is there in the script, so that I know everything about the character, so that I know the character that I'm playing as well as I know myself. And I think that is very, very important. It really helps me understand my characters better. And since I'm playing a singer in the film, she was kind enough to take me to Goa with everybody sitting here, and we were there for 2 days. I got an opportunity to see how music is created. I got to see Amit Trivedi create magic in that room in just a span of 2 days, and all of them, I was a witness to a scene where all of them were sitting and writing their songs, and it was so beautiful, because you hardly get to see something like this where contemporaries are sitting and laughing about, cracking jokes and working, helping each other out. It was a rare sight, and there was so much for me to absorb. I also observed 𝗙rie a lot while she was recording in the studio, and I remember when me and Anvita went into the studio for the first time, we had tears in our eyes when we heard her sing the first time. And it was a beautiful, beautiful experience. जहाँ तक bonding की बात करें, सबके साथ पट जाती है मेरी. And when the first day, as Triptii mentioned, we were in Goa, all together jamming. So first day pe, she gave a narration, and she took me into the world of Qala, which was so beautiful, so unique. And I want to tell this, that Anvita, that it's a second film, it's a 2 film down, and she has a voice of her own. Because you can say it sounds and looks like no one else's films. It sounds and looks like Anvita's film. It's Anvita. She's got a very special voice. So when she narrated the film, the whole story, the whole world, it plays in your head, and you kind of start thinking about it. And I actually slept over it, and I was thinking about it. Thinking about her character, his character, the whole world. And since music is the backdrop, and music, because she's a singer, he's a singer, the story is about the singers. So first day I was petrified. I was nervous because I didn't know how to handle this subject and this era, because as you correctly mentioned that you need to do justice to this, because you are touching some classic and 40s era, you better be good. So first day I was genuinely very, very nervous, and very, very nervous. So I didn't do much. We actually heard the story, then we partied. As usual, we had fun. We went out, did our thing, slept over. मुझे नींद नहीं आया उस रात को, because it was just playing on my head. And next morning, of course, you have to do a self-talk and push yourself, encourage yourself. Come on, Amit, you can do it. You can do this. And then one by one, slowly and gradually, I entered into this world, this beautiful world. And then in
2-3 days it was all done. Like we didn't even know. 4 days में पूरी एल्बम हो गई थी, 4 दिन. It was all done. So yeah. I really wanted to tell a story about a mother and a daughter. And mentioning mothers, I'm really missing 𝗙𝗵𝗲𝗃, who's actually playing Urmila, Kala's mother. She unfortunately couldn't be here. She's amazing in the film. So ये माँ बेटी की कहानी थी, and it was with me for a long time, and I wanted to put it down. So the fact that it is period, जब वो कहानी आई, जब वो मैं बैठी हुई थी, कॉफ़ी पी रही थी और कहानी मेरे कमरे में धीरे से चल के आई, वो उस साल को बिलोंग करती थी. I didn't force it there, I didn't plan it like that, but it belonged to that. So that's where it came from. How I created it, I think I'm very clever. I rode on the shoulders of giants. I have this incredible DOP called 𝗙𝗵𝗲𝗹𝗵𝗵. Okay, वो पता नहीं कहाँ से उसका वो दिमाग और वो talent है. उसको मेरी सारी बातें समझ आ जाती है, which I think is by itself a talent. So he just creates, he paints with light, So there's him, there's Meenal Agarwal, my production designer, who takes, हमारी बातें होती हैं about, Devan and I will talk about Dutch Golden Age and Art Nouveau, and it's like Meenal just spins magic out of just conversations. तो वो दुनिया जो आप कह रहे हो, world building, और उसमें खड़ी होती है Qala with her performance, and then she's draped in magic again by Veera Kapoor, who again takes all of this information and it's really, I'm just standing over there thinking, my God, I'm so lucky, because मैंने तो सिर्फ सोचा था, किया तो इन्होंने. So it's all these people come together, we make the film, then an editor steps in and he cuts it just right so that it sings. So for me, I didn't do it alone. There were some 150 people from the music department, my producer, the OTT, the set dressing boy, the light men, so many people. They made this picture. मैंने सिर्फ सोचा. I want to ask Anvita. Hi. So you have written quite a few Hindi movies, dialogues, and lyricist, as a lyricist, and there've been quite a few like Bollywood mainstream commercial films. But then you seem to be drawn at these dark fairy tales. And you told me last time, Bulbul ke time, ki there are a lot of childhood memories that you go back to. So what about this film? And also I like to ask Babil, like how is he charting his journey? Like Anvita and then Babil. So those I wrote for other people. So वो वैसे सोचते हैं. But as a commission writer, I do my best, try to do my best to serve their vision. These are the stories that speak to me. So however fantastical the world might be, मैं fantasy बहुत पढ़ती हूँ, science fiction or fantasy. That's my genre of choice. But जब stories आती हैं मेरे दिमाग में ऐसी आती हैं. I like to tell these kind of stories because they're actually stories about universal truths and feelings and emotions जो सब identify कर सकते हैं, but they come wrapped with claws and